अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा राज्यं गच्छेत्। झारसुगुडा स्थले रेल आधारभूत संरचना औद्योगिक क्षेत्रेण च सम्बद्धानां विकास परियोजनानां कुर्यात् असौ शुभारम्भम्। तत्रैव BSNL इत्येतस्य समवायस्य स्वदेशी 4G नेटवर्क इत्येतस्य अपि कुर्यात् शुभारम्भम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अथ भारतीय जनता पार्टी दलस्य नेता अमित शाहः बिहार यात्रायामस्ति। अद्य समस्तीपुरे अररिया स्थले च उपवेशनं कुर्यात्। आगामि बिहार विधानसभा निर्वाचनपरे सज्जता विषये भवेत् चर्चा। डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणां मन्त्रणायां कृतवान् अध्यक्षतां। बहुपक्षवाद संयुक्तराष्ट्र परिष्कारेषु आसीत् तदीयं बलम्। अद्य संयुक्तराष्ट्र महासभायां प्रकाशितं स्यात् विदेशमन्त्रिणः सम्बोधनम्। अंडमान सागरे प्राप्तंगतं प्राकृतिकवातीन्धन भाण्डारम्। केन्द्रीय मन्त्री हरदीप पुरी इत्येषः उक्तवान् भारतस्य ऊर्जा क्षेत्रे महती उपलब्धिः। क्रीडावार्तायाम् एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः विशिष्ट चतुष्कवर्गीये महत्वपूर्णे द्वन्द्वे भारतेन श्रीलङ्कादलं पराजितम्। श्वः समाचरितः स्यात् भारत-पाकिस्तान दलयोः मध्ये निर्णायकचक्रीया स्पर्धा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा राज्यं गच्छेत्। तत्र असौ झारसुगुडा स्थले रेल आधारभूत संरचना औद्योगिकक्षेत्रेण च सम्बद्धानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं कुर्यात्। अत्र प्रायः 17 कोटिमूल्यस्य रेलविभागस्य बृहत्तमं परियोजनात्रयम् उद्घाटयेत्। सहैव प्रधानमन्त्री बेहरामपुर उधना स्थलयोः मध्ये सञ्चाल्यमानम् अमृत भारत एक्सप्रेस इति रेलयान सञ्चालनमपि समारभेत। झारखुडतः असौ IIT संस्थानानां विस्तारणस्य घोषणाम् अपि कुर्यात्। तदनु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय कौशल विकास कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्यात्। तावच्च अन्त्योदय योजनायाः अन्तर्गतं 50,000 संख्याकेभ्यः लाभार्थिभ्यः सहायतामपि प्रदद्यात्। सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र ओडिशा राज्यस्य झारसुगुडा स्थले BSNL इत्येतस्य समवायस्य स्वदेशी 4G नेटवर्क इत्येतस्य अपि शुभारम्भं कुर्यात्। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मोदी प्रशासनस्य योजनानां केन्द्रे नारीशक्तेः सदैव महत्वपूर्णं स्थानम् अवर्तत। महिलाः राष्ट्रनिर्माणाय केन्द्रत्वेन भवन्ति इति भावनया अथ महिलाः आत्मनिर्भराः भवेयुः एतच्च निध्याय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने बिहारराज्ये मुख्यमन्त्री महिला जीविका योजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 75 लाख महिलानां बैंकलेखासु 10,000 रूप्यकाणि सम्प्रेषितं गतानि। महिलाः एतद्राशेः उपयोगं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, हस्तवेमादिभ्यः कार्येभ्यः कर्तुं प्रभविष्यन्ति, येन नैजं जीवनं निजपरिवारं च शक्तिसम्पन्नं कर्तुं शक्नुवन्ति ताः महिलाः। दृश्यश्रव्य प्रणालिकया आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहारवासिभ्यः महिलाभ्यः उक्तवान् यत् मुख्यमन्त्री महिला जीविका योजनायाः लाभं प्रतिगृहम् एका महिला प्राप्स्यति। मुख्यमंत्री महिला जीविका योजनायाः शुभारम्भावसरे प्रधानमन्त्री मोदी महिला लाभार्थिभिः समं संवादमपि कृतवान्। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने
केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतवर्षीयं राष्ट्रिय भूविज्ञान पुरस्कारं प्रदत्तवती। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या उत्खनन विकास पर्यावरण संतुलनम् आवश्यकं प्रतिपादितवती अथ उक्तवती यत् भारतं $5 ट्रिलियन मुद्रा समन्वितार्थव्यवस्थात्वेन निर्मातुम् उत्खनन क्षेत्रस्य महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। बिहार विधानसभा निर्वाचनं समाश्रित्य सर्वाणि दलानि द्रुतगत्या प्रचाराभियाने संलग्नानि सन्ति। शासनारूढं दलं भवतु उत वा विपक्षस्य दलानि भवन्तु, सर्वाणि एव दलानि नैर्वाचनिक समराङ्गणे अवतरन्ति इति। अनुक्रमं तावत् भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेतुः अथ केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य बिहारप्रवासे अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। अत्र क्रमे अमितशाहः समस्तीपुर अररिया क्षेत्रयोः भाजपेति दलनेतृभिः अथ कार्यकर्तृभिः समम् उपवेशनं कुर्यात्। एतेन साकमेव अमितशाहः सहरसा पूर्णिया भागलपुर क्षेत्राणां मण्डलस्तरीये कार्यकर्तृसम्मेलने अपि सम्मिलितः भवेत्। तत्रैव केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गतदिने कोलकाता नगरस्य कालीघाट मन्दिरे कालीमातुः पूजाम् अनुष्ठितवान्। सममेव अमितशाहः कोलकाता नगरे एव पूर्ववर्ती क्षेत्रीये सांस्कृतिककेन्द्रे दुर्गापूजापरस्य मण्डपस्य उद्घाटनं विधाय तत्र उपस्थितान् जनान् अपि मिलितवान्। अत्रावसरे अनेके वरिष्ठाः नेतारः अपि तेन सह उपस्थिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य यात्रायाम् अस्ति। अत्रान्तरे असौ न्यूयॉर्क नगरे ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने अध्यक्षतां कृतवान्। तावत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बहुपक्षवाद संयुक्तराष्ट्रपरिष्कार विषयेषु सविशेषं बलं प्रदत्तवान्। अत्र क्रमे अद्य विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः संयुक्तराष्ट्रमहासभायां स्वीयं सम्बोधनमपि प्रकाशयेत्। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इत्येतस्य मन्त्रालयस्य केन्द्रीय मन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्येषः उक्तवान् यत् अण्डमान सागरे प्राकृतिक वातीन्धन भाण्डारं प्राप्तं गतम् अस्ति। अत्रान्तरे हरदीप पुरी इत्येषः उक्तवान् यत् अण्डमान सागरे प्राकृतिक वातीन्धन भाण्डार प्रापणेन भारतस्य ऊर्जाक्षेत्रे महती उपलब्धिः समागमिष्यति। असौ इतोपि कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वतन्त्रता दिवसस्य स्वके सम्बोधने राष्ट्रिय गहन जलान्वेषणाभियानस्य घोषणां कृतवान् आसीत्। अस्य अभियानस्य प्रयोजनं सागरे तैलवातीन्धनस्य अन्वेषणकार्यम् इति अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रदत्तं समुद्रमन्थन इति नाम संवलितम् एतद् हि अभियानं द्रुतगत्या कार्यं करिष्यति इति अवधानयोग्यम्। तत्रैव अग्रे वर्धामहे। शुक्रवासरे नवदिल्ल्यां तत्र कार्यं पत्रकारैः संवादक्रमे असौ सहयोगसंवादम् आवश्यकम् इति एतत् प्रतिपादितवान्। भारतस्य विविधैः देशैः सह संस्कृतिसंवर्धनस्य दिशि एकः अन्यः अपि उत्तमः प्रकल्पः सञ्जातः। तावत् गतदिने नवदिल्ल्याः भारतीय विद्याभवने स्थितस्य नंदलाल नोवाल इंडोलॉजी केन्द्रस्य अथ मॉस्को नगरे स्थितस्य ऋषि वशिष्ठ इंस्टीट्यूट इत्याख्यस्य संस्थानस्य संयुक्ते तत्त्वावधाने वैदिक मंत्रोच्चारैः दीपप्रज्वालन पुरस्सरं च पुस्तक विमोचन कार्यक्रमः समाचरितः। एतद्धि संस्कृतस्य सुप्रसिद्धस्य दार्शनिक ग्रन्थविशेषस्य योगवशिष्ठस्य आङ्ग्ल रूसी भाषयोः अनुवादितं पुस्तकम् आसीत्। अत्रान्तरे संस्कृतभाषायां लिखिताः भारतीयज्ञानग्रन्थाः अग्रे संवर्धयितुम् उभयोः विभागयोः मध्ये सन्धिपत्रमपि हस्ताक्षरितं गतम्। तावत् कार्यक्रमे रशियादेशस्य ऋषि वशिष्ठ संस्थानस्य नैके विद्वांसः, भारतीय विद्याभवनस्य अनेके गणमान्याः छात्रछात्राः च समुपस्थिताः अभवन्।
तावत् पुस्तकस्य माहात्म्यं प्रख्यापयन् भारतीय विद्याभवनस्य न्यासी अथ पंजाब तमिलनाडु असम मेघालय राज्यानां पूर्वराज्यपालः श्री बनवारीलाल पुरोहितः उक्तवान् यत् इदं पुस्तकम् उभयोः देशयोः मध्यगतं सांस्कृतिकम् ऐक्यभावं प्रदर्शयति। कार्यक्रमे तावत् अब तक शायद इतना बड़ा विद्वान यूनिवर्सिटी जैसा और रशिया में उनके नाम से इंस्टीट्यूशन खोलना, भारत की संस्कृति और रशिया की संस्कृति बड़ा प्रचार, वो आकर्षित हैं, खाली वो समझना चाहते हैं। और ये भारत की जो संस्कृति है, धर्म ध्वजा है, इसको पूरे विश्व में फैलाने में पहला कदम आगे बढ़ाएं, रशिया के साथ जुड़ के और आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रमे तावत् भारतीय विद्याभवनस्य नंदलाल नोवाल इंडोलॉजी इत्येतस्य केन्द्रस्य शासनिकायस्य अध्यक्षा प्रोफेसर शशिबाला वर्या कथितवती यत् योगवशिष्ठ पुस्तकस्य आंग्ल रशिया संस्करणं यूनां मनसि महत्वपूर्णं परिवर्तनं समानयिष्यति। जब भगवान राम की रुचि जो है सांसारिक जीवन से दूर हो रही थी, परंतु आगे श्री रामचंद्र को बहुत सारे कार्य करने थे, कोई ज्ञान उनकी आवश्यकता थी उस समय, जो उनकी चेतना को, उनको रुचि जागृत करे कि ये जो संसार है इसकी रक्षा भी आवश्यक है। तो उस समय जो है मुनि वशिष्ठ ने आकर जो उनको ज्ञान दिया वो उस ग्रंथ में है। आज का युवा जो है वो बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत डिप्रेशन है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी आप बातें सुनते हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो भटक गया है। तो जो भटका हुआ मन है उसके लिए योग वासिष्ठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आवश्यकता है इसको ठीक से पढ़ने और समझने की और अपने जीवन में उतारने की। विदुषां वक्तव्यक्रमे भारतीय विद्याभवनस्य श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्यः डॉक्टर छवि कृष्ण आर्यः सविशेषं कथितवान् यत् योगवशिष्ठ ग्रन्थस्य वैश्विकपटले इतोपि अधिकः प्रभावः अवलोकितः भविष्यति। रामस्य जीवने यद् अवसादः जातः सीतायाः हरणकालान्तरे एवमेव इदानीमपि जीवने बहूनाम् अभावानां प्रभावेण अत्र एतादृशः प्रभावः अवलोक्यते। युवानः हताशाः सन्ति, ते हतप्रभावाः सन्ति। तस्य तेषां कृते वसिष्ठस्य शास्त्रस्य प्रभावः एक नवीन जागृतिः उत्पद्यते। यदा वनवासकाले रामस्य जीवने चेतसि वैराग्यं जातं, तद्वैराग्यं यत् समुद्भूतं तस्मिन् विषये यत् उपदेशः दत्तः श्रीमद्भिः वसिष्ठमहोदयेन, तस्यैव विस्तारः योगवसिष्ठशास्त्रे वर्तते। इदानीं विश्वपटले अस्य आवश्यकता दरीदृश्यते, यतोहि संस्कृतस्य प्रभावः संसारस्य समस्मिन् अखिले साहित्ये वर्तते। इदानीं विश्वशान्तेर आवश्यकम् अस्ति यत् योगवसिष्ठस्य प्रभावः सर्वस्मिन् अखिले विश्वे अपि स्यात्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।